We'll look at the next question, 19. So the 19th question is Ananya Rao, a dynamic IAS officer, currently serving as the district collector of a prominent district in Maharashtra, known for her innovative approach to governance and administration, has embraced social media to bridge the gap between government and people. Over the past year, her Twitter account has grown 2 lakhs, making her one of the most followed civil servants in the country. Ananya uses her social media to provide regular updates on government schemes, disaster management efforts, and community outreach programs. For instance, during the recent floods in her district, she used Twitter to coordinate relief efforts, share real-time updates, and address public queries. Her timely and However, an active social media presence has not been without controversy. Critics argue she is more focused on building her personal brand. Frequent posts compromise impartiality. Additionally, concerns sensitive information confidentiality. Tweeted about a successful crackdown on illegal mining, sharing details of the operation and arrests made. While the post was intended to highlight the administration's effectiveness, it was met with backlash from some quarters, including legal experts. Furthermore, an editorial in the Hindu raised questions about the potential for political favoritism. Okay, so what are the basic framework, introduction, what is the main issue? First question is discuss the ethical issues involved in civil servants using social media. Use the thinker theories, same models. What are the short-term benefit versus long-term, status quo versus change, how it can affect the individual, like it can benefit the individual social media, like boost the morale, it can improve the image, thereby improve the output as well, while it can also compromise on confidentiality, how it can affect neutrality, how it can affect the Nolan committee civil service values like objectivity, neutrality, transparency, etc. Like it helps in transparency, but it might affect confidentiality, it might affect neutrality and impartiality. And wherever possible, try to add examples, like not wherever possible, in 1 or 2 instances you can even add examples in case studies. And second part is analyze the potential benefits and drawbacks of this trend for public administration. One is benefits, so you talk about take the civil servants service values, transparency, how it affects transparency, how it benefits accountability, how it can negatively impact the confidentiality, how it can possibly affect policy implementation in the future, how it can create negative public perception, etc. Then you can talk about positives and negatives. Then next question is propose guidelines that can help balance the use of social media by civil servants with their professional responsibilities. Again, here also you can talk about it in terms of guidelines can be from the operational perspective, operational or procedural, it can be from the attitudinal perspective, it can be from the technological, or it can be in the short term, long term, or in any other suitable way, like depending on the question, like you can take it from like a policy level, implementation level, feedback level, like suitably divide it and then give guidelines. Here also use thinkers and theory as far as possible. Like you use utilitarianism, use Epicureanism, use civil service thinkers like Weber's idea of impartiality, or Niti Aayog's idea of dynamic bureaucracy, or something like how Hegel said expertise is needed, or how neutrality and expertise is needed. Like use civil service thinkers and theories as well. Last question is discuss how they can maintain the value of anonymity in the age of digital democracy. So here you can talk about how possibly they can have handles for the post and not the individual, or you can talk about like from the frames that I had mentioned for ethics, like you can talk about how you can target the audience, target the schemes and all that, but not talk about the individual. And there also you don't necessarily talk about the details which can negatively impact policy or law and order, but just talk about why some positive steps were taken to instill trust, to increase trust, and etc. So in that way, again, like it's a 20 marker, 4 questions, 5 points each roughly, and introduction and conclusion. Conclusion, again you can say these guidelines and the above mentioned steps and suggestions, if taken, can logically solve most of the guidelines and most of the issues and dilemmas, and at the same time ensure that the bureaucracy is efficient and dynamic, something of that sort. Hi, a very good evening to all of you. I hope prelims 2024 आप लोगों का सही से हुआ होगा. Now is the time when you should prepare for mains wholeheartedly. And to help you in assisting in this endeavor,
वी आर कमिंग अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नोन एज सिविल सर्विसेज एक्सेलरेटर प्रोग्राम। देखो मेंस में आपको हर कोई बोलेगा कि 450 नंबर जीएस 1 2 3 4 में आने चाहिए, ऐसे में 120 130 आने चाहिए, बट हाउ टू अचीव इट, वो करना कैसे है, कौन कौन से वो पिलर्स है जिन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो पिलर्स देखो बहुत बेसिक है। फर्स्ट वी गोइंग टू इंश्योर दैट जो भी हम यहाँ करंट अफेयर की क्लासेस लेंगे दे गोइंग टू बी लिंक्ड विद द स्टैटिक पार्ट, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, चाहे यूपीएससी फिर बाद में स्टैटिक पोर्शन से पूछे या फिर करंट से, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। सेकंड इज अबाउट एथिक्स, कि आप एथिक्स अच्छे से कवर करिए, बोथ पोर्शन सेक्शन ए एज वेल एज द केस स्टडीज, एंड इफ यू डू इट प्रॉपर्ली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। देन फिलोसॉफिकल एसेज, सबसे कम मार्क्स आजकल एसे में आने लग गए स्टूडेंट्स के, 80 90 100 तक मैक्सिमम लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो हाउ टू इंश्योर दैट कि वो मार्क्स हमारे 130 तक पहुंचे, उसके लिए हम ऐसे फोकस करेंगे। एंड देन यू गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज व्हिच इज गोइंग टू इंश्योर कि यार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओ और इवेलुएट कर पाओ अपने आप को। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज व्हिच वी गोइंग टू फोकस अपॉन। इनफैक्ट दीज आर द पिलर्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स। A team of faculties including me, we are going to assisting you in each and everything. We'll have Rajvardhan sir, we'll have Neha ma'am, me alongside some other faculties will also be part of this. We'll focus on 3 areas, okay? जो टॉपिक बहुत स्टैटिक लगते हैं लेकिन वहां से करंट का क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले से ही संभाल के रखेंगे। सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, लगता नहीं है कि आएगा बट आ जाता है। ट्रेंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन, क्लाइमेट चेंज, ऐसे ऐसे जितनी भी थीम है वो इसमें आएंगे। एंड थर्ड ईयर स्पेसिफिक। ईयर स्पेसिफिक मींस दैट इस साल जैसे मान लो साइंस एंड टेक में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हैं तो यूपीएससी वहीं से पूछ लेता डायरेक्ट क्वेश्चन, सो दोस काइंड्स ऑफ करंट अफेयर विल आल्सो बी कवर्ड। सो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, दिस इज द कोर्स फॉर यू। कि सारी आपकी करंट अफेयर की चिंता फिनिश। With respect to ethics, we have one of the most stalwart person, Atul sir. Atul sir has been teaching for more than 13 years ethics. है ना, जब से शुरू हुआ है 2013 से पेपर, तब से सर पढ़ा रहे हैं। And if you want to get his mentorship, then eventually जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं एथिक्स में वो सारी सॉल्व आउट हो जाएंगे, चाहे वो आपकी बेसिक कंसेप्ट हैं, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं, इफ यू नॉट एबल टू इंक्लूड द थिंकर्स इन द आंसर वो भी सॉल्व हो जाएगा। अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी रिफाइंड। In fact, he has already taken an orientation session. You can just watch it on our YouTube channel and you will get very good outcome for that. Ethics में जो होंगे लगभग 20 घंटे के आसपास क्लासेस होंगी, आपको PYQs वगैरह के लिए हेल्प की जाएगा, हैंडआउट्स दिए जाएंगे, अच्छे एग्जांपल जाएंगे, एंड प्लस मोर इंपॉर्टेंटली 1-to-1 mentorship is going to become a part of it. So ethics is one area where very important. Then comes the essay. In the essay we are going to focus upon philosophical areas. तो पहले वहां पे आपको टीच भी करेंगे, me along with Manikant sir as well as Kapil Sikka sir. We are going to be part of this so that those of you who can eventually get the best out of yourself, आपको कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। So focus किस चीज पे रहेगा? Coverage of all the important themes which are there in the PYQs, और सबसे ज्यादा फोकस फिलोसफी पे ही करेंगे। Then handouts दिए जाएंगे, आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी कराई जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू कैन स्कोर वेरी हाई इन द एसे। लगभग 25 से 30 घंटे की क्लासेस होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट, कंपाइलेशन, वर्कशीट, 1-to-1 मेंटरशिप, सारी चीजें आपको अच्छे से दी जाएंगी। एंड इफ यू आर एबल टू अचीव इट, मेक श्योर दैट कि आप तरीके से उसको यूटिलाइज करें एंड फाइनली आउटकम लेके आए मेंस के अंदर। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट सीरीज, ऑल द फैकल्टीज आर गोइंग टू बी टुगेदर टू इंश्योर दैट जो भी आपका एरिया होगा उसमें आपको अच्छे लेवल का हम आउटपुट दे पाए, आपको अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाए, चाहे वो GS 1, 2, 3, 4 या फिर ऐसे पेपर हो। So that's why you're going to have a test series also along with this. And in this test series, we have to make sure questions quality, model answers, the discussion sessions, all of them they are top notch, so that इस साल जो मेंस है आपके लिए एक eventually game changer बन जाए and we are able to become a part of your success journey. This is the objective with which we are starting this program, and this program is going to be very very useful for all those students who are eventually becoming part of the mains for this year. अभी prelims का result आने वाला है, so let us hope majority of you have worked very hard, आपका final call आ ही जाए। Many sessions are going to happen, some have happened like ethics का session has already been taken by Atul sir and June 25 was taken. essay का जो है 2 जुलाई को होगा। Answer writing template का जो session है it will be taken by the rank 4 of this year. It's going to focus specifically on paper 2, paper 3. Current affair की classes 28 जून को first होगी, it will be dealing with IR. इसकी सेकंड क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक ऑन द जुलाई ऑफ 4th होगा। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, आप इन सेशंस का पार्ट बनिए। दीज सेशंस आर ओपन इन नेचर, ट्राई टू गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड एंड वंस यू फील लाइक नहीं ट्रस्ट आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस इंस्टीट्यूट पे, देन बिकम अ पार्ट ऑफ द program, and once you become part of this program, we'll take care everything from your side. Okay, so all the very best. If you have any query, any doubt, you can reach out to these numbers. These numbers, if you dial, you'll get the
link to our counselors and they will help you out in understanding. if कोई डिटेल में आपको लगता है कोई इश्यूज लग रहा हो कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से, they will help you out with respect to that also. And for all the important kind of videos, you can stick to our YouTube channel and we're going to help you out in the whole UPSC civil services preparation. All right, all the very best. Thank you so much.